मेरी क्रिसमस ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू विटी क्रिएटिविटी। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इजी क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बनाए थे एंड टुडे यू विल गेट टू सी हाउ आई मेड माय ओन क्रिसमस ट्री एंड डेकोरेटेड इट. Also there are 2 DIYs in the video, so watch this video completely and yeah, subscribe if you haven't. This is how I decorated my Christmas tree. You can see the wreath and the snowman that I have made in my previous video. All the Christmas ornaments, the Christmas bells, glittery stars, paper snowflakes, mini gifts, they all are adding an exceptional charm to my Christmas tree. Plus, I have also bought some ornaments from the local market. So let's see how I made this big Christmas tree. So in this DIY, I am showing you a mini Christmas tree which is replica of my big Christmas tree. So you'll get an idea how I made this because I could not film the tutorial of my big tree due to shortage of time. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. For my big Christmas tree, I made use of these two things. This is a water jar and this is a cane stool. वाटर जार को सपोर्ट रखते हुए मैंने उस पर चार्ट पेपर का कोन बनाया, जस्ट लाइक आई शोड यू इन द फर्स्ट DIY. और फिर एंटायर कोन को मैंने ग्रीन जेलेटिन पेपर से कवर अप कर लिया. And then I decorated it with 2 shades of Christmas garlands bought from local market. Further decorated it with ornaments, gifts, candle, toys, fairy lights and so on. फिर कोन वाला पूरा सेटअप मैंने केन स्टूल के ऊपर रख दिया, जिससे कि क्रिसमस ट्री के स्टेम जैसा ये दिखने लगेगा. In this DIY candle, have tried to give a snowy icy look. For that I have taken a bluish glass. You can also take a bowl. Then you will need white rangoli and some silver sparkle or what you say shimmer. Further मैंने glass के edges पर Vaseline apply किया and dipped it in the plate containing rangoli. As you can see, it has got covered with rangoli and it's giving nice snowy effect. Now I have filled the 3/4 glass with rangoli and placed a tea light candle. आप ग्लास वाटर से फिल अप करके
ऑयल डालकर वाटर कैंडल्स भी बना सकते हैं। आई हैव सेपरेट वीडियो ऑन वाटर कैंडल्स विच आई हैव मेड विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स। I would appreciate if you check that out. Link is in the description. Please watch that video as well. नेक्स्ट थोड़ा और स्नोई इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने पैकेजिंग फोम के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। I have also added some shimmer on the top of candle to give it a magical look. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. कैंडल को मैंने इस ब्लू कोस्टर के ऊपर रख दिया है। दिस कोस्टर आई हैव मेड इन माई किचन डेकोरेशन वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो इन दिस वे आवर स्नोई आइसी कैंडल इज़ रेडी। और ये क्यूट सा सेंटा जो आप देख रहे हैं ये मेरी मॉम ने बनाया है इन जस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम ट्वीटी वाला पिगी बैंक प्लेस्ड ओवर अ घी कंटेनर। शी वॉज लाइक कि सेंटा तो रहना चाहिए डेकोरेशन में, बट आई वॉज नॉट हैविंग मच टाइम टू मेक वन, सो शी ट्राइड इट एंड आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। So this is how I decorated my Christmas tree. I hope you enjoyed watching this video because I enjoyed making all these DIYs. Give this video a like, press that red subscribe button, click on bell icon with all option to receive all updates from Witty Creativity. That's all for today guys. Once again wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. See you soon in a brand new video. Till then, keep smiling. Bye bye. Thank you.